Ever imagined how much of the price you pay for a cup or a kilogram of tea goes to the grower? While tea, and especially specialty tea, fetches a high price in the market, the same does not translate into a higher income for those who give their life to growing tea. Tea plucking and packaging is mostly a woman-run affair. Is it not time that the women see the benefits too when their tea fetches a higher price? This is where the Grassroots Tea Corporation, a part of the Udyamini project, is trying to intervene. Speaking about the project and how it helped her, Lolita Rongpipi, a tea grower from Ra Rongpi village in Karbi Anglong district of Assam, said that GTC and its interventions had helped her increase her income up to 300%. Agote 1 kg 20 টকা পাই আছিল তে আমি 5 কেজিত হে 100 টকা পাই আছিল তেতিয়া এতিয়া আমি গ্ৰীণ টি বনালে 1 কেজি পাতৰ 5 কেজি পাতৰ 1 কেজি গ্ৰীণ টি হয় তেতিয়া আমি এতিয়া মিনিমাম 300 টকা পাই আছো. This change did not happen overnight and required training and assistance by personnel from the Grassroots Tea Corporation. This was a part of GTC's efforts to ensure that the rural woman entrepreneur receive a holistic education when it comes to tea, helping them not only increase their income but also learn how to better their market products. Growing tea and selling it for a higher price is not the only aim of the GTC. An equal amount of focus is paid to ensuring that the tea is grown without any chemical fertilizers, ensuring that the tea tastes and feel as natural as possible. GTC, acting as a technical partner in the Udyamini Rural Women Entrepreneur Program, provides technical inputs to women in small tea growers' households to cultivate chemical-free tea, manage operating tea processing units, and market ethical, traceable, premium Karbi handcrafted tea. প্ৰথমত আমি ৰাসায়নিক সাৰ দি কৰিছিলো এটা যেতিয়া জিটিসিৰ ফালৰ পৰা মানুহ আহিছে তেতিয়াৰ পৰা আমি হেই সাৰ বনোৱা হিকালে জিটিসিৰ ফালৰ পৰা তেতিয়া আমি সাৰ বনাবলৈ শিকিছো সেই সাৰটোৱে আমি প্ৰয়োগ কৰিম এতিয়া জৈৱিক সাৰ আৰু ঘৰ বনোৱা সাৰ. This not only supports the women in generating sustainable income but also promotes environment-friendly and socially responsible practices in the tea industry. Talking about the program, Arindam Ghosh, project manager for the GTC, says the work with SDGs begins with the nature of the soil. हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें कि हम लोग शुरू कर रहे हैं कि लैंड केमिकल फ्री कि कैसे उसको केमिकल को रिड्यूस किया जाए कि इसके लिए हम लोग कुछ टेक्निक्स हम लोग अपनाएं जो कि हम लोगों को सिखाए हम लोगों का ट्रेनिंग के द्वारा इन लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं जैसे कि लैंड आइसोलेशन एक बफर जोन मेंटेन करके कैसे लैंड को आइसोलेट किया जाए उसके बदले में ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र है ऑर्गेनिक जो पेस्टिसाइड है उसको यूज़ करके कैसे ऑर्गेनिक चाय मतलब उगाया जाए. पहले चाय को कल्टीवेट किया जाता है फिर उस चाय को फाइन लीफ जो बोलते हैं कि एक बर्ड और 2 लीव्स को लेकर उसको हैंड रोल महिला लोगों को कैसे सिखाया जा रहा है कि कैसे हैंड रोल करके उस टी को प्रोसेस करके और जीटीसी के द्वारा उसको मार्केटिंग का फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं. GTC's intervention and the course of intervention was dictated by their baseline survey which showed that women in this region only knew how to sell their tea leaves but not process it. कि हम लोग जब बेसलाइन सर्वे किए थे तब पता चला था कि इधर का जो महिला लोग जो चाय का जो पत्ती उठाते हैं नॉर्मली क्या करते हैं कि जो फैक्ट्री है और जो एजेंट है उनके द्वारा बेचते हैं. ठीक है उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम यही था कि इतना दिन के लोग उनको हार्वेस्ट करके 15 से 20 रुपए किलो में कभी कभी 7 से 10 रुपए किलो भी मिलता है क्योंकि जब सीज़न ख़त्म हो रहा है तो उसमें मोनोपोली रहता है. लोगों को जो एजेंट है वो डिसाइड करे दाम और वो हार्वेस्ट करके वो बेचते हैं मार्केट में. GTC is also working with women so that they can allocate a part of their land for growing chemical-free tea. Through this, the tea producers will be able to sell the processed, high-quality handcrafted tea. पहले क्या होता था कि लोग 15 से 20 रुपए के 5 किलो अगर पत्ता बेचते तो 100 रुपए के आसपास उसको मिलता था. अगर वो वही 5 किलो ग्रीन लीफ से 1 किलो मेड टी बनता है ग्रीन टी तो अगर 5 किलो ग्रीन लीफ बेचेंगे उसको 100 रुपये मिल रहा था. अगर 5 किलो ग्रीन लीफ से 1 किलो मेड टी बनाएगा तो उसको क्या होगा कि उन लोगों को एक हाउस होल्ड को
1 किलो मेड टी के लिए कम से कम 300 रुपया मिलेगा। डिपेंड करते हैं उसका, अगर क्वालिटी और अच्छा होगा तो और अच्छा दाम मिल सकता है। The process of making tea begins, of course, after the women entrepreneurs have picked the best tea leaves. The tea leaves, once plucked, are steamed in a bamboo tray for 10 minutes, after which they are let to cool for around 2 minutes. After the first steam, they are hand rolled to ensure the maximum extraction of flavors. Then they are let to rest for a few minutes, and after that, they head to the dryer, which resembles a large oven, where it is cooked for up to 40 minutes. Getting the right dryer was a challenge too, and it is only now, after a couple of iterations, that the right machine was made available, courtesy Tea Engineering Works, a Tinsukia-based company. Since the machine will be operated in an area where electricity is erratic at best and can be absent for weeks during inclement weather, the machine is equipped to run on LPG too. After this, the tea is packed and is ready to be sold in the market. For now, the GTC is planning to sell the tea mostly to other businesses. But plans to sell the tea in the retail market are also being discussed. The GTC is also working on launching a digital app to ensure that the women can keep track of their work. Don't forget to like, share and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.